हाँ जी, तो है ना कमाल की चीज, खाली छोड़ेंगे इस माइंड को जी। तो ये हमारे को वही सोच शुरू कर देता है। वही सोच रहा था मैं इनफैक्ट कि हाँ, वो कैमरा ऑन रखोगे तो मेरे को तुम्हारे रिएक्शन पता लगेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आता। जी, एक्चुअली मोबाइल डाटा है ना, तो ये इसके लिए कैमरा बंद करके रखा हुआ है। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा, तो वाईफाई तो नहीं है ये क्या? नहीं, वाईफाई नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो ये सोच रहा था कि हाँ, इसको बैलेंस करना अपने आप में एक ट्रिक है बहुत बड़ा। नहीं है, यही तो तुम्हें बताया, वो बाम्बू उसको दे दो, सांस आ रही है सांस जा रही है। अब ऑफिस का काम है तो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ भैया, वो माइंड कर रहा है प्रॉपरली, काम खत्म। जहां से अटेंशन खत्म हुई, अवेयरनेस खत्म हुई, भैया ये काम मेरा पूरा हो गया, वापस उसको बाम्बू पे चढ़ने उतरने के लिए लगा दो। 3 मिनट की ब्रीदिंग कर लो, ग्रेटिट्यूड कर लो कि भैया तुमने काम निपटा दिया। ये एक्टिविटीज इसीलिए हम लोग कर रहे हैं अभिषेक। वो प्लेजेंट जी। एक्सपीरियंस काउंट करना शुरू कर दो, वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस काउंट करना शुरू कर दो। कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब, वो एक्टिविटीज दी ना वर्कशीट तुम्हारे को। हाँ हाँ भैया। तो यही सब चीजों में तो उसको हमें अपने आप को देखना है कि भैया कहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। चीजें बहुत सिंपल हैं। ऑटो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, उसको ऑटो पायलट मोड से हटा के कॉन्शियसली उसको काम पे लगा दो। मैं ऐसे ही एक पढ़ रहा था, तो एक ने बोला कि यार मेडिटेशन करने का तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट यार सांस के ऊपर फोकस करके मैं बोर हो गया, आ रही है जा रही है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचा। शुरू में मेडिटेशन करता था तो चलो मजा आता था, अब मैं बोर हो गया। बोले सांस को क्या नोटिस करूं यार, आ रही है जा रही है ठीक है ना, ऑटोमेटिकली चल रही है वो। तो उसने एक बात बोली उसको, बोले एक काम करो कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करो। बंद किया उसने। बोले अब अपना नाक बंद करो। नाक भी बंद कर लिया उसने। अब कितनी देर तक करता? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, हालत खराब। फाइनली उसने हाथ हटाया। बोले मजा आया, सांस को आते जाते देखो। सांस नहीं आई तो क्या हालत हुई। तो कोई कोई चीज जो हमारे को माइंड हमें बोल रहा है बोरिंग है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है। और हम बोलते हैं यार क्या बोरिंग एक्टिविटी है ये, सबसे एसेंशियल एक्टिविटी है। ये सांस इस बात का प्रूफ है कि आई एम अलाइव। एक टाइम पे खाना लेट हो गया, खाना नहीं मिला, चलेगा। एक सांस मिस होती है, हार्ट अटैक होता है। सो हमने किस चीज को कितनी वैल्यू दे रखी है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको कितनी वैल्यू दे रखी है। तो ये जो हम लोग डेली करते हैं, उन्हीं बोरिंग चीजों के अंदर से हमारा माइंड हट चुका है, कुछ और नया चाहता है, कुछ नया अनएक्सपेक्टेड होता है, सर्टेनिटी नहीं होती है। तो फिर फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, ये सब आते हैं, जो फिर हम बोलते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। तो एनीवे,
ये सब चीजों के अंदर इंटरेस्ट वापस लेके आना है। और जो तुमने नोटिस किया कि आ रही है जा रही है, ये समझो कि ये थॉट कितनी शॉर्ट लिविंग होती है। और थॉट तो एक्चुअल में शॉर्ट लिविंग होती है, बट वो कंटिन्यूस आती रहती है, तकलीफ उधर होती है। एंड समटाइम्स कभी क्या होता है कि द माइंड गेट कंप्लीटली इनटू दैट थॉट्स ओनली। करेक्ट, माइंड गेट कंप्लीटली इनटू दैट। फिर जब हमें पता लगता है अरे यार आई एम थिंकिंग टू मच अबाउट इट, वो माइंडफुलनेस हो गई हमारी। तो जितना कॉन्शियसली हम लोग इस माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, इसी मेडिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसमें कॉन्शियसली माइंड को टास्क असाइन कर रहे हैं कि यहां फोकस करो, थॉट के ऊपर फोकस करो, ब्रेथ के ऊपर फोकस करो, इमोशंस के ऊपर फोकस करो। शायद पिछली बार हमने वो साउंड के ऊपर भी किया था कि साउंड करो, मेरे एनवायरनमेंट में क्या है। हाँ। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठो, जस्ट ऑब्जर्व वेयर योर अटेंशन इज गोइंग। चॉइसलेस मेडिटेशन जिसको बोला था, चॉइसलेस एक्सपीरियंस, नो प्रेफरेंस, कोई साउंड नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई ब्रीदिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, जस्ट सिटिंग। कॉन्शियसली माइंड को काम असाइन कर रहे हैं हम। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो माइंड समझना शुरू कर देता है कि बिफोर गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू एनी एक्टिविटी, फर्स्ट आई नीड टू चेक द ओनर कि शैल आई डू सर और नॉट। एंड वही माइंडफुलनेस है कि यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि थॉट्स आर कमिंग, थॉट्स आर गोइंग, इमोशंस आर चेंजिंग। दैट मीन्स अभिषेक, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट इमोशंस, यू आर नॉट योर बॉडी। जिस वक्त ये समझ लोगे, उसी वक्त ये लिबरेशन आ जाएगा कि भैया आई एम नॉट डिप्रेस्ड, आई एम नॉट अ वरीड पर्सन, आई एम नॉट ए स्ट्रेस्ड आउट पर्सन, बिकॉज देयर आर थॉट which are stressful thoughts, there are emotions present in the body and they also come and go, depend on the situation, depend on the mindset, mood. So I am neither those thoughts nor I am that emotion, I am beyond both that, I am that awareness. एक बहुत बड़ी बात बताऊं तुम्हारे को, भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि ना तो मैं करता हूं और ना ही मैं कारक हूं जी, मैं क्रिया हूं। तो ये अवेयरनेस जो है, ये ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? एक्शन माइंड ले रहा है, ले रही है, थिंकिंग माइंड कर रहा है, और एक यहाँ अवेयरनेस बैठी हुई है जो ये देख रही है कि ये थिंकिंग हुई और ये बॉडी का एक्शन हुआ। तो ये अवेयरनेस जो है ना तो करता है और ना ही कार्य है, है ना? ये अभिषेक है, ये कमल है। ये बात समझ लो, अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी तुम्हारी, स्पेशली नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग है, प्रॉब्लमेटिक इमोशंस है। और मेडिटेशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आई एम जस्ट सिटिंग, आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम नॉट दैट पर्सन हु इज थिंकिंग, आई एम दैट अवेयरनेस विच इज ऑब्जर्विंग दिस पर्सन इज थिंकिंग। जैसे तुम बीच पे जाते हो तो तुम देखते हो वेव्स आ रही है, वेव्स जा रही है, तुम देखते हो कि गार्बेज बहुत पड़ा है, पर तुम ना तो वो वेव हो, वेव जो है वो तुम्हारी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो है जो अनवांटेड चीजें हैं जो किनारे पे आ गई हैं, ये सिर्फ किनारे पे गार्बेज पड़ा है। अंदर जाओगे तो डेप्थ भी है, ब्यूटी भी है, और स्टिलनेस भी है जी, है ना? तो ये हालांकि आगे का टॉपिक
बट इसी टेक्स्ट में था। जो समुंदर के अंदर गहराई में जाने पे इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द अर्थ कहते हैं। एग्जैक्टली तो यही तो मेडिटेशन में हम लोग करते हैं कि ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स। और जब थॉट्स हैं हम लोग बैठे हुए हैं, फिर देखते हैं यार मैं बैठा तो हूँ, ये तो स्टिलनेस है। तो इट्स एनालॉजी कि भैया थॉट्स हैं वो वेव की तरह है और समुंदर वहीं की वहीं है। वेव्स आई, किनारे पे गार्बेज दिखाई दिया, तो अगर गार्बेज दिखाई दे रहा है तो मतलब मेरा फोकस अभी किनारे पे है। जब मैं अपना फोकस और डीप लेके जाता हूं तो मुझे समुंदर प्रॉपर दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है, अंदर से दिखाई देता है। और यही स्टिलनेस को ही तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं आ रहे हैं सिचुएशन के, इवेंट्स के, सर्कमस्टांसेस के, ये सब सरफेस लेवल की रियलिटी है अभिषेक। डीपर लेवल पे तो हमें पता लग रहा है कि भैया अरे मैं बैठा तो हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, ये बॉडी के अंदर ये चीजें हो रही है। बॉडी, आई एम नॉट दैट माइंड, माई थॉट्स आर जस्ट शोइंग मी व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जैसे समुद्र में लहरें आई हैं, तो कोई बड़ी लहर आई, कोई छोटी लहर आई, कोई सुनामी आई, तो वो लहर आई, सुनामी आई, समुद्र उससे बहुत बड़ा होता है, समंदर उससे बहुत डीप होता है, समंदर उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। सिर्फ वो वाटर डिस्टर्ब है और हम लोग बोलते हैं कि यार समुंदर आज उथल पुथल कर रहा है। वो सिर्फ सरफेस लेवल पे है भाई। ऊपर सुनामी चल रही है और नीचे वही फिश आराम से मस्तियां कर रही हैं, है ना। एग्जैक्टली इसी अवेयरनेस को तो हम, उसी अवेयरनेस की तरफ तो हमें जाना है, और उसी अवेयरनेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये जो तुमने देखा, नोटिस किया कि थॉट्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अभी क्या हो रहा है, तुम फटाक से एक स्विमिंग बोर्ड उठाते हो और उस थॉट में चढ़ जाते हो, है ना। बट हमें है, जो अंगुली माल वाली स्टोरी बताई थी कि मैं तो कब का रुक चुका, ये तो तुम हो जो भाग रहे हो। और लास्ट वीक हमने किया था सेकंड एरो। उसके बाद हम लोग कितने एरो छोड़ते हैं। एक सिचुएशन का एरो है जो सिर्फ एरो है, पर उसके पीछे 50 एरो वैसे निकल जाते। एग्जैक्टली बट उसको हम लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, और वापस उसको परसीव करने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कितने एरो अपने आप को मारे जा रहे हैं। तो ये चीज नोटिस करनी थी। लास्ट वीक हमने यही सीखा था। तो कंटिन्यू दिस, आ रहे हो तुम उसी डायरेक्शन में, और थोड़ा कॉन्शियसली लेके आओ। उसको बांबू दे के रखो भूत को, है ना। दूसरी बात, तुमने बोला था कि माइंड डाइवर्ट करता हूं, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वापस वहीं आ जाता है। आज हम इसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। माइंडफुलनेस यही चीज बोलती है। लास्ट वीक हमने यही किया था ना कि बिकम द मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एवर्जन, है ना जी। तो यही काम किया था आज फिर, और उसी के आगे काम करते हैं। दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी भैया। हाँ, तो डिस्कवर ए डिफरेंट एंड हेल्दी वे ऑफ रिलेटिंग टू एक्सपीरियंस। जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो तुमने बताया कि थॉट्स आ रही हैं जा रही हैं, दिस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, बट हाउ डू वी रिलेट इट। एक होता है नेगेटिव वे में, भी आई डोंट वांट इट, क्योंकि थॉट्स आ रही है जा रही है, विच आई डोंट वांट दोस थॉट्स। जी। तो ये एक रिलेट किया तुमने अपने आप को उस एक्सपीरियंस के साथ। तुमने एक एक्सपीरियंस किया कि थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग। नाउ तुम रिलेट कर रहे हो कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। सो व्हाट इज दैट
different and healthy way, we can relate to that experience. And how we can relate is, the healthiest way is power of acceptance. हम accept ही करने को तैयार नहीं होते कि this is part of me. Again, part of me, not me. Waves are part of sea, not sea. Tsunami is part of sea, but not sea. Clouds, sun, moon, planets are part of the space, but not the space. So understanding what I'm trying to say, accept that there are certain emotions, accept that there is a sunny day and there is a rainy day and there is a winter day. So acceptance is very, very important. Problem is aversion, avoiding, not wanting, not accepting. जो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि भैया शेर है और शेर से भागेंगे तो शेर चेज करेगा. Accept, boss, that you have a lion, you have a tiger with you, and that is your pet. जब तुम उसको एज ए पेट की तरह एक्सेप्ट करते हो, then you are not afraid of that. You are not hiding from that. ना कुछ गलत धारणा हमारी बन जाती है कि भैया मेरा बॉस खराब है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं तो मतलब बस ऐसे ही करता रहूं काम पे, मतलब मैं सफर करता रहूं उसके अंडर में काम करके. ये तो कोई कॉर्पोरेट का या ये कंपनी का तो कल्चर नहीं है भैया. बॉस खराब है तो उसको अपनी नेचर बदलनी चाहिए. हर आदमी उससे परेशान है. बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बॉस खराब है या नहीं है. मैं अपने माइंड में कि बॉस खराब है अपने आप को बोल के अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहा. So acceptance is about letting go of the fight, letting go of the fight with your difficulty. कि I'm not willing to accept. जो तुमने लास्ट वीक भी बोला था कि तुम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो and then when they don't accept your thing, deny, then you are not able to accept them. So acceptance doesn't mean resignation कि भैया ठीक है यार मैं कुछ नहीं कर सकता. होता है ना भाई जब सिचुएशन मेरे हाथ में ही नहीं है तो फिर भाड़ में जाए यार. ठीक है भैया मान लेते हैं ये बात, मजबूरी है मेरी. तो acceptance is not resignation, nor does it mean clinging on. So clinging on means ये नहीं होता कि यार मेरी कुछ डिजायर है और उससे इतना अटैच हूं that I am constantly clinging on to that desire. That means I am accepting that desire. तो वो दोनों ही नहीं है acceptance. हम लोगों ने कुछ अलग डेफिनेशन बना रखी है उस एक्सेप्टेंस. Acceptance is a first step of acknowledging your present moment experience. So it's acknowledging your present moment experience just as it is. I am feeling sad, I am feeling sad. And then observe. Thoughts आ रही हैं, जा रही हैं. Sadness की एक इमोशन आया, माइंड ने बोला sadness है, आई गई. That is what it means. That knowing कि everything is constantly changing, coming and going. So why do I get attached so much to that feeling? नहीं ये मुझे चाहिए ही नहीं. Acceptance चाहिए ही नहीं. और लास्ट वीक ही हमने पढ़ा था या समझा था कि we cannot run away from our own emotions. We have to face them. So without accepting, without acknowledging that this is what I am experiencing, I will not be able to sit still and watch them go. If I accept them and remain unaffected by that emotion or that thought, thoughts are coming and going. Take it as
अदर एग्जाम्पल अभिषेक, एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। जी भैया। तुम रेस्टोरेंट चलाते थे, जी। तुम सब्जी लेने गए, मान लो कुछ हम्म, सिंपल, चलो टमाटर लेने गए, हम्म। तुम्हारे को सब्जी वाला जबरदस्ती खराब टमाटर देता था? हाँ, कभी कभी चेपने की कोशिश करता था। चेपने की कोशिश करता था ना, हम्म, तुम एक्सेप्ट करते थे? नहीं। एग्जैक्टली यही बोलने का हुआ था कि तुम्हारा ही माइंड तुम्हें अनवांटेड थॉट्स चेपने की कोशिश कर रहा है। पोलाइटली सिट, माइंड बोलेगा अच्छा इसको नहीं चाहिए, दूसरी चॉइस दो। वैसे ही अगर तुम्हारे को कोई टमाटर चेपने की कोशिश कर रहा है, तुम बोलते ये नहीं चाहिए, जी। तो रिप्लेस कर देता है ना। बिल्कुल। एग्जैक्टली यही माइंड करता है। तुम उससे एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें बार बार वही चिपकाए जा रहा है। तुम स्टिल बैठो कि ठीक है भैया ये खराब है, ये नहीं चाहिए, हटा दिया, दूसरा अपने आप आएगा। तो ये सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, तुमने माना ना कि वो तुम्हें चेपने की कोशिश कर रहा है, जी। यही एक्सेप्टेंस है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कुछ चेपने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। यही एक्नॉलेज करना है कि दिस मोमेंट आई एम experiencing this, so I accept this moment that I am experiencing this. So अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि how to foster this quality of acceptance, how to foster that attitude of acceptance। क्योंकि कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस का मतलब भैया सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया मतलब हार मान गए। ये बहुत ज्यादा होता है, लोग अपनी सिचुएशन के साथ लड़ते हैं, भैया हार नहीं मानूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। वो कॉन्स्टेंटली सिचुएशन के साथ फाइट करते रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि बॉस मैं सिचुएशन से फाइट नहीं कर रहा हूं, अपने ही इमोशन से फाइट कर रहा हूं इवेंचुअली। और उस फाइट के अंदर वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। बट अगर ऐसे ही हम लोग हाथ मिला लें, तुम एक जानते होगे कुछ पॉलिटिशियन लोग गलत लोगों के साथ हाथ मिला के रखते हैं, जिनको हम गुंडे बदमाश भी बोल देते हैं। तो वो उसी नेगेटिव एलिमेंट ऑफ सोसाइटी को किस तरीके से अपना फेवर में लेके अपने काम करते हैं। जब हम भी ऐसे ही जब अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारी फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम उनके साथ ही फाइट करते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। तो acceptance is a very very essential element of mindfulness of our personality। तो acceptance को और थोड़ा सा समझें तो यही है, allowing your experience to be just as it is। as it is means I am sad or yeah I am thinking too much, I am noticing thoughts are coming and going which are unwanted thoughts, so acknowledging them as your present moment reality, accepting difficult feelings, thoughts, sensations and inner experiences। So this is what is accepting in mindfulness, not the situation। वो तो पॉइंट। हाँ? जी भैया, समझा।
हाँ, situation will also change, but my clinging to difficult feelings, thoughts and sensation and inner experience which I don't want, ये ठीक वैसा ही है अभिषेक कि जैसे मैंने आंखों पे लाल कलर का चश्मा लगा लिया तो मुझे हर तरफ लाल ही लाल दिखाई देगा, पीले कलर का चश्मा लगाया तो हर तरफ पीला ही पीला पीला दिखाई देगा, है ना? that's right. Clinging to those emotions, इमोशन, मैं हर सिचुएशन को, हर अपॉर्चुनिटी को इवन अभिषेक उसी तरीके से इवेल्युएट करूंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं नेगेटिव इमोशन स्टेट में हूं और मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी खड़ी होगी, बट क्योंकि मैं इससे फाइट करने में उलझा हुआ हूं, ये डिफिकल्ट फीलिंग से, थॉट से, सेंसेशन से, इमोशन से, अगर इन्हीं से फाइट करने में उलझा हुआ हूं, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है और मैं उसको पहचान ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं और बिजी हूं. सो एक्सेप्टिंग इज फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट फाइट. जो यहां पर है, लेटिंग गो ऑफ द फाइट विद योर डिफिकल्टी. And another way is willingly let them remain in our awareness कि हाँ ठीक है, ये है और I am aware of that. यानी जब मैं अवेयर हो जाता हूं तो मेरे को वो नुकसान नहीं पहुंचा रही है. अगर मैं अवेयर नहीं हूं तो मेरा माइंड उसी वो मकड़ी की तरह जाल बुनना शुरू कर देता है उसके अराउंड. बट अगर मैं अवेयर हूं तो इतनी सी है वो. दूसरा है एक्सेप्टेंस इज नॉट ए कॉम्प्लिसेंसी यानी रेजिग्नेशन एटीट्यूड या गिविंग अप एटीट्यूड. हार मान लेना नहीं है, सरेंडर कर देना नहीं है, सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं, अपने आप को छोड़ देना नहीं है, हालात के भरोसे छोड़ देना नहीं है. This is the way to find the right solution in the right way. Exactly, ये है allowing your experience to be just as it is, not these. You come to this level of observer, you come to the level of awareness, you are aware of this element, that this emotional difficulty is going on, and you observe and it passes away quickly. Another word for acceptance is acknowledge, allow or let be. तो आप बोलोगे let be, हाँ ठीक है यार, रहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है उसको. अभी यही समझो कि अगर तुम रह रहे हो बैंड्रा में और कोई तुम्हारा फ्रेंड आके थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहता है, then you allow that ना. बिल्कुल. और तुम बोलते हो यार उसकी नेचर अलग है, मेरी नेचर अलग है, फिर भी आप बोलते हो लेट बी यार, थोड़े टाइम की बात है. So you don't get attached to that. You don't get hassled. You allow that person to be there for a while. और वो अपने आप चला जाएगा. अतिथि तुम कब जाओगे वही था ना. अनवांटेड गेस्ट आ गया अजय देवगन के घर पे, जो कि उसका रिलेटिव भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अलाउ किया और वो बार बार बोलते रहे यार कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, बट लेट भी किया तो जल्दी चला गया. तो ऐसे ही होता है. अब ये तो होगी वर्ड्स की बात. प्रॉब्लम आती है यहां पर. मेडिटेशन करने बैठे हैं, जैसे ही पीस की तरफ जाओ, माइंड तुम्हारा जंगली भैंसे की तरह सींग मारना शुरू कर देता है. उठो है. उठो, ये काम अभी बाकी है. बिल्कुल सही बोला आपने. हाँ, बिल्कुल सही बोला ये आपने. सारे काम याद नहीं आएंगे, पर जैसी मेडिटेशन में बैठने की सोचेंगे सारे काम याद आएंगे. तो वो हमें
बैठने नहीं देता है, और यही हमें एक्सेप्ट करना है दैट दिस माइंड इज राइट नाउ हैविंग डिफिकल्ट थॉट्स. रादर थैंक देम कि आई एम नोटिसिंग दिस, these are the pending works I need to do complete. So thank बोलोगे, अगर उसको एक्सेप्ट करोगे. और जैसे कोई तुम्हारा सेक्रेटरी है और वो तुम्हें आके बोलेगा कि सर ये काम है, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, यार फॉर रिमाइंडिंग मी, आई विल डू इट. फिर तुम वापस अपने काम में लग जाते हो. फिर तुम्हारा सेक्रेटरी आके बोले कि सर ये काम है, फिर तुम बोलोगे अरे हाँ. बट ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने आके बोला तुम फटाक से भाग के चले गए वो काम करने के लिए. नॉर्मल मेडिटेशन में यही हमारे साथ प्रॉब्लम होती है. कुछ माइंड में आया, अरे यार मेडिटेशन नहीं हो रही, छोड़ दो, वो पहले काम कर लेते. सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट. यू रिमेन स्टिल. अगेन यू रिमेन स्टिल, अनदर थॉट कम, अगेन योर secretary knock down the door and remind you another work, again you still. तो 2-3 बार 5 बार 10 बार के बाद सेक्रेटरी भी समझ आती है, या आप सेक्रेटरी को बोल देते हो आई नो माई वर्क, लेट मी फोकस व्हाट आई एम डूइंग राइट एंड रिमाइंड मी लेटर. करता है ना ये बॉस, क्योंकि उसको अपनी प्रायोरिटीज पता है. सेक्रेटरी उसको रिमाइंडर के लिए है, उसकी बॉस नहीं है. बॉस को अपनी प्रायोरिटीज पता है. ऐसे ही जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो माइंड बार बार आके हमारे को पेंडिंग वर्क दिखाएगा, बट इफ यू टेल दैट माइंड दैट राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज सिटिंग हियर एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, रिमाइंड मी आफ्टर द हाफ एन आवर सेशन, आई एम बिजी विद VIP पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, अभिषेक. So don't disturb for next half an hour. And फिर तुम वापस उस भूत को काम पे लगा दो, ब्रीदिंग के ऊपर, थॉट्स काउंटिंग के ऊपर, ब्रेथ काउंटिंग के ऊपर. इमोशन ढूंढो कहाँ पे पड़े हुए हैं जो अनवांटेड हैं, या सेंसेशन कहाँ हो रही है. उस भूत को उस काम पे लगा दो आधे घंटे के. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभिषेक? So you decide your priorities while meditating. This is your priority. While going to office, you are assigning the work to the mind. Count steps. जी. तो ऐसे काम में एंगेज रखोगे, then automatically रियल टाइम मिलता है माइंड को, वो कम होना शुरू हो जाता है. एक सबसे बड़ी हिंड्रेंस एक्सेप्टेंस की, जजमेंट. जजमेंट टुवर्ड्स सिचुएशन, जजमेंट टुवर्ड्स पीपल, जजमेंट टुवर्ड्स योर ओन शॉर्टकमिंग्स. You judge yourself also and you judge people also. और एक टाइम आता है सब लोग तुम्हारी तरफ उंगली कर रहे हैं और तुम भी अपनी तरफ करने लग जाए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए. तो जब जजमेंट हो जाती है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज वांटेड, दिस इज नॉट वांटेड, दिस इज गुड, दिस इज बैड, तो वहां एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती है, वहां पे चॉइस आती है. सो चॉइसेस वर्सेस एक्सेप्टेंस में बहुत डिफरेंस है. I choose acceptance, I am accepting everything. जी. तो जजमेंट को ड्रॉप करना है. वन ऑफ द की फीचर ऑफ माइंडफुलनेस इज नॉन जजमेंट. और तुम नोटिस करना शुरू कर दो अभिषेक, दिन में हजारों बार हम लोग जज करते रहेंगे, या तो अपने एक्शन को, अपनी थॉट्स को. अनवांटेड थॉट है, जैसे हम बोलते हैं अनवांटेड थॉट है, आपने जज किया उसको, आपने चॉइस, आपने बताई कि दिस इज नॉट वांटेड, दिस इज वांटेड. दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज नॉट राइट फॉर मी. जी. सो जजमेंट जहां आ जाती है वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो सकती. मतलब मेरे मतलब की चीज होएगी
तो एक्सेप्ट होगी, अगर मेरे मतलब की नहीं होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जजमेंट। जी। दूसरी चीज, इफ यू फील अपसेट और हर्ट, हम्म, अर्ज इज टू फाइट इमीडिएटली टू फील बेटर। यही बहुत सारे लोग करते हैं, अटेंशन डाइवर्ट। अटेंशन और डाइवर्ट करने से प्रॉब्लम नहीं गई। प्रॉब्लम बढ़ती है। एग्जैक्टली ये मैंने लास्ट वीक वो फाइंड आउट किया। हाँ। सो दिस if you don't हाँ if you don't do the right acknowledgement and हाँ you try to divert your mind without acknowledging the problem in हाँ the certain way, हाँ the problem increases because जो मैंने बोला थॉट जाती है आती है, that is one of the reason हाँ, यस, actually what I realized. करेक्ट करेक्ट। और वो थॉट आ रही है जा रही है क्योंकि उसको हमने जज किया कि दिस इज नॉट वांटेड। बिल्कुल। भाई रीजन क्या है? नॉट व्हाई नॉट वांटेड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग। जब हम उसको दूसरे तरीके से, एक्सेप्टेंस वाले तरीके से करेंगे, यस दिस इज वांटेड बट नॉट राइट नाउ, बिल्कुल। यानी ये एक्सेप्ट किया मैंने बट नॉट राइट नाउ, सो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगा। बिल्कुल। तो यही हम अपने साथ भी कर सकते हैं। जी। So opposite of this avoidance tactic may work for a short while. Attention diverting may work for a short while, but in the long run it does just the opposite of what you wanted. जी। You end up feeling more tense and hurt because you are in denial. बिल्कुल। Difficult feelings become stuck to you if you try hard to constantly fight or avoid them. वो छोटे होते थे हम, तो मुझे याद है खाते थे या बबल गम खाते थे और वो कहीं चिपकती थी तो हम लोग उसको इधर से हटाते थे तो जगह चिपक जाती थी, दूसरी जगह से उठाते तो तीसरी जगह चिपक जाती थी। जी। सिंपल सोल्यूशन है, हाथ गीले कर लो और वो चिपकेगी नहीं। बट हमें नहीं पता था, कपड़े से उतारी, यहाँ से उतारी, दूसरी जगह चिपक गई, चिपक गई, तो वो चिपकेंगी हमारे साथ और भी ज्यादा। या वहां पे तेल लगा दो निकल जाएगी। हाँ, दो सोल्यूशन थे। करेक्ट। बट वो सोल्यूशन की तरफ हम ध्यान नहीं देते ना, हम लोग सिर्फ फाइट करने में उलझे रहते हैं। तो रिमूव करो यहाँ से, बस उसमें उलझे रहते हैं। तो हमारी एनर्जी वहां जा रही है, तो सोल्यूशन की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना। फिर जी भैया। कि हमें अपने इमोशन के ऊपर ध्यान रखना है। जितना हम फाइट करेंगे द मोर दे विल स्टिक। सो फीलिंग्स वांट टू बी फेल्ट रादर देन पुश्ड अवे। तो जो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है या मेरे अंदर फीलिंग क्रिएट कर रही है, दे वांट टू बी फेल्ट। If you accept them, they will ease off in time. Mindfulness, you are encouraged to skillfully welcome, accept and explore your emotion. इसको अगर दूसरी तरह से लाइफ एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल विभीषण ने मान लिया था उसका भाई रावण जो है गलत है, उसने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया था, एंड समवेयर रावण आल्सो एक्सेप्टेड कि विभीषण की सोच अलग है। तो कंपेयर टू अदर ब्रदर्स, रावण although used to dislike Vibhishan, but somewhere he used to like him, correct, for certain things. And the same exactly. way with Vibhishan, although Vibhishan never used to like Ravan because of his activities, but he used to like him for some good things also what he had inside. Correct. और उन दोनों का, क्योंकि रावण की लंका में और कोई विभीषण के अलावा श्री राम लिख के रह नहीं पाया कभी जीवन में। और विभीषण ही एक इंसान था जो रावण को बोलता था तू गलत है यहाँ पे, उसके अहंकार के अगेंस्ट, क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था मेरा भाई जैसा है वो ऐसा ही है। एंड सेम वे रावण इज एक्सेप्टेड विभीषण कि मेरा भाई जैसा है वैसा वो तो बोलेगा ही मेरे अगेंस्ट में। करेक्ट। सो अगर हमने भी अपने थॉट्स को
उसी डायरेक्शन पे अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ये आने तो है ही, इससे फाइट करने से बेटर है ठीक है आ गया भाई, तू अभी तू तेरा बाम्बू पकड़, तू जा, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि तू तो मेरे ही शरीर का हिस्सा एंड ऑफ द डे। यस, एग्जैक्टली। वो अब हिस्टोरिकली या माइथोलॉजिकली ना देख के अगर हम लोग अपने रिलेट करें, तो रावण मेरे अंदर बैठा है जो है, और विभीषण भी मेरे अंदर बैठा है जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। बिल्कुल, है ना? तो गॉड एंड डीमन बोथ आर विद इन मी। दैट्स ट्रू। तो दैट इज व्हाट आई कैन टेक इट एज आल्सो, कि विभीषण भी है और रावण भी मेरे अंदर है। सो आई नीड टू एक्सेप्ट बोथ, बट आई एम स्टिल अनअटैच्ड। आई एम दैट अवेयरनेस, आई एम दैट ऑब्जर्वर हु नोज कि रावण भी मेरे अंदर है और विभीषण भी मेरे अंदर है। जी, गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट इज हम माय, that you know both are there, but still you are not both. A mixture of both. दैट्स ट्रू। वेरी गुड है। तो मुझे लगता नहीं कि ये एक अब बेबी स्टेप की तरफ आगे जाने की जरूरत है, तुम ऑलरेडी उसी स्टेप में हो। है ना? जी भैया। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है अभिषेक, एक्सेप्टेंस के ऊपर है। दिस बीइंग ह्यूमन इज ए गेस्ट हाउस। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएम का नाम है द गेस्ट हाउस, और रूमी की पोएम है ये। ओके। द बीइंग ह्यूमन इज ए गेस्ट हाउस, every morning a new arrival, a joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. ऐसा ही होता है ना, डेली बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड विजिटर आते हैं। जॉय, डिप्रेशन, मीननेस, मैनरनेस, हैप्पीनेस। So welcome and entertain them all. Welcome and entertain them all, even if they are crowd of sorrow. होता है ना बहुत बार सिचुएशन एक के बाद एक सब गलत हो रहा है। बिल्कुल। Even if they are a crowd of sorrows who violently sweep your house. बहुत बार डिस्टर्ब फील करते हैं हम लोग। Empty of its future furniture, इसी तरह से हिला देता है। बिल्कुल। And still saying that still treat each guest honorably. So honorably means with a lot of respect. He may be clearing you out for some new delight. है ना? The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. Be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond. So beautiful poem. Now start noticing around this. What are you welcoming and how are you welcoming? Are you welcoming smilingly, laughingly, or are you shutting your doors, trying to shut your door? वो फिर भी अंदर घुसेंगे। तुम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, दरवाजा बंद भी करना चाहते हो, बट वो इमोशंस, वो थॉट्स फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसेंगे अगर तुम नहीं उनको अलाउ करोगे तो। सो dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing and invite them in. So ये पोएम भी भेजूंगा मैं, इसको पढ़ना, एंड मे बी थ्रू आउट द डे ट्रीट ईच गेस्ट ऑनरेबली। तुम देखना कि कहां कहां क्या क्या रेजिस्टेंस आ रही है, एवर्जन आ रहा है, और कहां कहां एक्सेप्टेंस आ रही है। जी। है ना?
और ये शायद लास्ट टाइम स्टोरी भी बताई थी ना, पॉइजन एरो। बिल्कुल। तो हम लोग जब एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते कि मेरे को एरो लगा है, तो हम लोग उसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? बिल्कुल। और अगर अवॉइड करेंगे उस एरो को जो लग चुका है, रेजिस्ट करेंगे, तो हमारे को ही हर्ट कर रहा है और ज्यादा डीपर लेवल पे। जी, जो राजकुमार को एरो लगा तो सबसे सवाल पूछते पूछते मर गया। मर गया। एंड इवेंचुअली यही फिर होता है कि हमारे ही नेगेटिव इमोशन जो है हमें धीरे धीरे उसी तरफ लेके जाते हैं। हेलो। पिछली बार हमने वो रेन एक्सरसाइज की थी ना, हाँ भैया। तो आज फिर करेंगे। ओके। आज इसके अलावा बैक टू बैक करें क्या, दो दो मेडिटेशंस, या ब्रेक ले लेंगे एक छोटा सा? चलेगा ना भैया, बैक टू बैक भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा लंबा ना हो जाए। चलो रुको, पहले वही रेन एक्सरसाइज करते हैं। मेडिटेशन में एक्चुअली लंबा तो पता नहीं, तो मेरे को बहुत मजा आता है, पीस ऑफ माइंड आ जाता है, मतलब पूरा ब्लैंक हो जाता है माइंड। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, पर एक दो दिन तक ना मैं हाँ। बहुत अलग जोन में रहता हूँ। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि सब एक खेल चल रहा है एंड हाँ। आई एम जस्ट वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। वैसी वाली फीलिंग जोन में आ जाता हूँ मैं तो। वंडरफुल। तो फिर हम लोग करते हैं, दो मेडिटेशन करते हैं आज। थोड़ा सा सेशन छोटा भी हो जाएगा, बट आई थिंक ठीक जी भैया। है ना? तो पहले वही रेन का करते हैं, एक्सेप्टेंस वाला, दैट रिकॉग्नाइज, आर फॉर रिकॉग्नाइज, ए फॉर अलाउ, आई हम्म। इन्वेस्टिगेट, एंड एन फॉर नॉन डूइंग, नॉन जजिंग। कुछ नहीं करना उसको। एक सेकंड। अभिषेक, आवाज आई थी? हाँ भैया, बेल की आवाज आई थी। आई थी ना? ठीक है, तो मैं करता हूँ स्टार्ट। The rain exercise. For this exercise, find a comfortable sitting posture. Your back should be erect and the posture should be dignified. And now, allowing your eyes to close. And we will start off by revisiting an event or a situation that caused you difficult emotions. The more recent the event has been, the easier it will probably be for you to vividly remember it. So take a moment
to bring to your mind the particular situation. What happened? If you are a visual person, you can really bring the image to your mind of this event. Where were you? Who were you with? And what exactly happened that triggered the difficult emotions? Did someone say something or do something? Or something particularly difficult happened? And when you have the situation vividly in your mind, we can then start with the exercise. The first step is to recognize what was going on inside of you at that time. Which difficult emotions were you exactly experiencing? Was it fear or anxiety? Anger or sadness? Or some other emotion? So take a moment to feel the emotion that was present and then to give it a name. Which sensations that you experience in the body? Difficult emotions are usually accompanied by intense physical sensations. So take a moment to feel the sensations and again to give them a name. You might have experienced pressure in some parts of your body or some other form of discomfort. You might have felt hot or cold. Maybe your head was spinning or your heart was pounding. And finally, let us have a quick look at thoughts.
which thoughts were going through your mind. In case of fear, you may notice worries. Worries that something could go wrong or something might happen to us. With anger, there are often judgmental thoughts about others or about a situation. And with sadness, we could perhaps be revisiting some kind of events that hurt us. And now that you have recognized what is going on inside of you, see if it is now possible to simply allow the emotions to be there. Observing this strong, difficult emotions and just letting them run their course. When we experience difficult emotions, we tend to resist them. We don't like them. So we don't want to give them a space. But this really only makes our sufferings greater. Emotions have a role to play. And if we allow them to simply do their thing, they will rather quickly subside again. And if you like, you can go a little step further and actively accept the emotions that you experience. You can even tell yourself that it's okay to feel these emotions. It's human to experience difficulty. I accept the way I am feeling right now. This too is okay. Apart from accepting the emotions, you can also choose to accept what happened. The situation that created these difficult emotions. Again, you can tell yourself, I accept what happened. I accept this situation. This does not mean that we agree with what happened. With that, we give up. It simply means we acknowledge that this happened
Again, letting go of the resistance to that event or the situation. And finally, you can also bring this acceptance to yourself, to you as a person. It's human to make mistakes, to suffer. I am a good person. I am doing the best I can. Very often, when we experience difficult emotions, we criticize ourselves. We blame ourselves, perhaps for not being good enough or for what we have done. This is really just a way that we harm ourselves. Criticizing ourselves does not help, and instead, let us choose to bring acceptance to who we are. Kindness, self-compassion. These are very healing practices. Now let us see if we can investigate our experience a bit further. First of all, see if you can investigate the thoughts that you are experiencing right now. Asking yourself the question, is this true? Is this thought really true? Very often, when we experience difficult emotions, our thoughts seem to go somewhat crazy. They become very strong and negative. So asking yourself, is it true that I am not good enough? Is it true that this person never does anything good for me? Is it true that things will never be all right again? Whatever thoughts you see arising in the mind, simply asking the question, is this true?
Thoughts are not facts. So do not believe everything you think. And if this feels useful to you, you can also decide to investigate a little bit deeper into your mind. Especially if you notice that these difficult emotions arise often in your life and in similar circumstances. If so, and if you like, you can ask yourself the question, where do these difficult emotions come from? And see if you can investigate this question in a meditative way. This means that we simply ask the question and then become silent. We do not start to actively think about a solution or an answer. As human beings, we very much try to think our way out of problems or difficult emotions. But interestingly, oftentimes this does not really help us, and instead makes us more locked up in our mind or more worried. So simply asking yourself the question, where do these difficult emotions come from? And taking a few more moments to become silent inside. You might notice that no clear answer immediately arises in the mind, and that is, of course, normal. But by practicing this exercise, you might notice that at times you get a glimpse into your deeper inner world, where you might discover things that are not always pleasant. Sometimes we find some traumatic memories or limiting beliefs about ourselves, such as the beliefs that I am not good enough. Something must be wrong with me. Sometimes we find strong desires like a desire to be loved or alike. And if any of
these things present themselves, see if you can simply bring allowing attention to this. Acceptance, kindness for yourself, and after going through these previous steps, see if you can now simply notice the result of this exercise. How do you feel right now? Perhaps you may have noticed that by practicing in this way, we can create a little bit of distance between ourselves and our emotions and thoughts, realizing that emotions and thoughts, as well as sensations, are temporary things. They come and they go. You are not your thoughts. And for the last few moments, simply resting in awareness. In your experience of this exact moment, here and now. And feel free to congratulate yourself for taking the time to really deal with these difficult emotions. For facing something that many of us are afraid to face. And I hope this rain exercise has helped you to release some of the heaviness of these emotions and to discover a deeper connection with yourself.
हेलो, भैया आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ, मैंने कहा चलो एक बार खत्म हो जाए तो फिर बताना व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू डिस्कवर, वेयर डिड यू डिस्कवर दोस डिफिकल्ट इमोशंस, then शुरू it was allow, accept, what difference happened? शुरू it was fine, smooth था, हम्म प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बीच में थोड़ा सा पता नहीं क्यों बॉडी स्टिफ फील कर रहा था सडनली, हम्म नेक एंड बैक पेन कर रहा था, तो आई लाई डाउन हम्म एंड माय इमोशंस वेंट ऑन सम डिफरेंट। और एक अजीब सी थॉट प्रोसेस आई सामने। हम्म मतलब मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, मेरी चप्पल एक होल में गिर गई है, देन उस होल से चप्पल निकालने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ एंड उतने में बारिश हो जाती है हम्म और दोनों आदमी उनसे मैं एक एक बारी मिला हूँ, जो इस हम्म पूरे प्रोसेस के अंदर हम्म दिमाग में आए, पर उनसे कोई लेना देना नहीं। कहाँ से हम्म सडनली उस थॉट प्रोसेस में पहुंचा मुझे समझ में नहीं आया। हम्म। ये आते हैं अभिषेक जब हम थोड़ा सा स्लीपिंग की साइड चले जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कुछ भी ऐसे क्रिएट कर देता है जिसके कोई लॉजिक नहीं होते। जितने भी लॉजिक है ना अभिषेक, जी वो हम सब इस फिजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं या यूज करते हैं, और जब हम लोग एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाते हैं ना अभिषेक, हम्म, काम नहीं करते। हम्म, एंड ये बहुत बार तुम एक्सपीरियंस करोगे। ये वो पहले मेडिटेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अलग ही थॉट जोन पे चला गया। हम्म फिर बारिश से बचने के लिए किसी के यहाँ पे शेल्टर लिया, वहां पे कुत्ते थे, मतलब ऐसा कुछ था हम्म। अजीब सा, आई डोंट नो। दैट्स ओके, सिर्फ यही नोटिस करना है, हुआ बस। एंड जैसे ही तुम एक और चीज नोटिस करना कि कॉन्शियस होके वापस अपने को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, हो जाते हैं। जैसे ही तुम अवेयरनेस में वापस आ जाते हो कि ये थॉट आया था या ये मेरे को दिखाई दिया, जैसे ही तुम कॉन्शियस हुए वो ब्रेक हो जाता बिल्कुल। है ना? हम्म, तो ये यही है कि जब हम अपना कंट्रोल कॉन्शियसली छोड़ देते हैं तो अनकॉन्शियसली कुछ भी क्रिएट होता है, क्योंकि अभी तक हमने उसको प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं किया है। बिल्कुल। इसीलिए कभी भी नोटिस करना तुम, सपने कैसे अजीब आते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, हम्म, है ना? फिर हम लोग कहीं से पता लगता है, कहीं से सुना हुआ है कि सपने भी कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, बिल्कुल। और फिर हम ढूंढते हैं यार कि कोई मेरे को ये सपने क्यों आ रहे हैं और इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, वो सब में उलझ जाते हैं। जबकि कोई लॉजिक नहीं है उनका, बट हम लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में बहुत दुनिया की दुकानें चल रही हैं, दुनिया में बहुत लोगों की दुकानें चल रही हैं। जी योर ड्रीम्स, व्हाट ड्रीम्स आर टेलिंग यू, पता नहीं क्या क्या बोल के होता है, वो क्रिस्टल वाले, हीलिंग, वो सब आता है। बट वो है क्या एक्चुअली में? अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई थॉट आई और माइंड ने उसको किसी और तरीके से लिंक किया और उसको किसी और तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया। कोई लॉजिक नहीं लेता वो सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए तो हमारा नींद में जब सपने देखते हैं तो हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। बट जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जब अलग हो गया, कोई लॉजिक ही नहीं था जिसका, और सडनली हम लोग नींद से जागते हैं, एनालाइज करते हैं यार पता नहीं कहाँ से ये सपना आ गया जिसका कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। यही, एक तो
सबकॉन्शियस लेवल पे लॉजिक नहीं चलता। दूसरा जी कि जैसे सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ तुमने ये देखा, अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि ये तुमने देखा मतलब किसने देखा, क्योंकि एक तो वो माइंड था जो इस तरीके के इमेजेस या विजुअल तुम्हारे को दिखा रहा था, दूसरा एक माइंड था जो वो इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहा था। और उस बीच में एक और माइंड था वो जो दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहा था, कि एक जो दिखा रहा था और एक जो देख रहा था, है ना। जी वो इन दोनों से अनअटैच था, वो अटैच ही नहीं था। वो अवेयरनेस होती है। और वही मेडिटेशन के एंड में भी बोला था कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट योर सेंसेशंस, थॉट्स एंड इमोशंस कम एंड गो। तो जो ये अवेयरनेस है हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। आई एम नॉट दैट नेगेटिव थिंकिंग, आई एम नॉट दैट पॉजिटिव थिंकिंग, आई एम बियॉन्ड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई एम अनअफेक्टेड, अनअटैच्ड, आई एम बियॉन्ड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जजमेंटल हो गए, वो लॉजिकल वर्ड हो गया, बट सेम पॉजिटिव या नेगेटिव दूसरे के लिए, जो तुम्हारे लिए नेगेटिव हो सकता है दूसरे के लिए वो नेगेटिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए रेन इस वक्त बहुत अच्छी है, बीएमसी के लिए खराब है। हाँ, जो रेप्टाइल हैं जो बिलों में रहते हैं उनके बिलों में पानी भर जाता है तो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए रेन बहुत खराब है। एक अपने आप में एक रेन है, एक फिनोमिना है जो सिर्फ फिनोमिना है, वो गुड है बैड है ये हमारी ओरिएंटेशन के ऊपर, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, हमारी सिचुएशन के ऊपर, मेंटल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। रेन गुड या बैड है ही नहीं, रेन एक फिनोमिना है। ऐसे ही कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन गुड या बैड नहीं होती, हम उसको किस इमोशनल पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं, कौन सा चश्मा लगाकर देखते हैं, और हम उसको उस पर्सपेक्टिव के साथ टैग कर देते हैं, गुड बैड, वेरी गुड वेरी बैड, एक्सट्रीमली गुड एक्सट्रीमली बैड। जबकि वहां पे सिर्फ गुड एंड बैड ही होता है। नहीं, गुड एंड बैड होता भी नहीं है, गुड एंड बैड तो पर्सपेक्टिव है। अभी मैंने बताया जैसे कि रेन है भाई, वो वही कह रहा हूँ ना, पर्सपेक्टिव गुड और बैड का ही होता है, वेरी गुड वेरी बैड कुछ नहीं होता है, मतलब करेक्ट, बट वो पर्सपेक्टिव गुड और बैड भी मेरे ओरिएंटेशन के ऊपर, मेरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस वक्त मेंटल को किस मेंटल स्टेट में था। बिल्कुल। रेन अपने आप में बुरी है या अच्छी है ये सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव के ऊपर है, रेन सिर्फ रेन है। तो यही चीज समझनी हमें कि एवरी फिनोमिना एग्जिस्ट विदाउट एनी good or bad. It is we who tag those phenomena, those events, those situations, those circumstances good or bad. इसीलिए जैसे बताया कि थॉट्स हैं, जैसे समुद्र के अंदर वेव्स आ रही हैं, वो सिर्फ वेव्स हैं, ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आ रही हैं, वो थॉट्स हैं। लाइक डिसलाइक, वांटेड नॉट वांटेड, गुड बैड, ये मैंने पर्सनली अटैच किया है उन चीजों को, उन वेव्स को। वो सिर्फ थॉट एज ए वेव अपीयर हो रही है एंड आई एम जस्ट सीइंग देम एज थॉट्स, बट उनको टैग करना वो मेरा पर्सपेक्टिव है। और ये एक मेंटल एक्सरसाइज डूइंग मोड में आ जाता है। और अवेयरनेस जो है अभिषेक, वो इनसे परे है।
वो अवेयरनेस वो है जो देख रही है कि अभिषेक इसको गुड टैग कर रहा है या बैड टैग कर रहा है, और वो अवेयरनेस कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अवेयर है कि ये अभिषेक कर रहा है। तो हम लोग को उस अवेयरनेस वाले पर्सपेक्टिव पे जाना है, और जब हम लोग जी उसी पर्सपेक्टिव से या एक अनअटैच पर्सपेक्टिव से देखते हैं, देन वी डोंट गेट डिस्टर्ब, rather than we start seeing the whole picture also. Rather than focusing narrow on anything, we accept that thing as it is, and then we remain unaffected by the thing. It is just like a one of the thing there. घर में जैसे कितनी चीजें पड़ी होती हैं, बट हम लोग हर टाइम हर चीज को यूज नहीं करते, तो पड़ी हुई है, वो अफेक्ट नहीं कर रही है, बट ये घर के अंदर पड़ी हुई है, ये एक्सेप्ट कर लिया, और तुम बोलते कब, क्या पता कब कौन सी चीज कब जरूरत पड़ जाए, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आपने उसको अलाउ किया, ठीक है पड़ी रहने दो, जब देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो पड़ी है क्या जा रहा है। सो सिमिलरली हमारे इमोशंस भी ऐसे ही हैं, इमोशंस वांट टू बी फेल्ट, नॉट टू बी फाइट। This body is like a house, this body is like a palace, and there are so many things which are there right now, may not be useful, may be useful in the future, or maybe it was useful some time back but not useful in this moment. So mindfulness is living in this present moment without fighting, just allowing, accepting as it is, in an unattached manner. एक और छोटी सी मेडिटेशन और करें, जी 15 मिनट की है ये, करीब करीब जी 15 या 17 मिनट की है। एक सेकेंड। Lake meditation. During this lake meditation, the visual image of a lake will serve as our object of focus. For this exercise, you can lie down in a comfortable position on a mat or on a bed. Your back and head can be flat on the surface. Arms can be resting next to the body. Legs can be a little bit apart, with the feet falling slightly outward. And once you are comfortable,
Gently close your eyes. You can start off by taking a moment to settle into the body, sensing the weight of the body pressing down onto the surface, and noticing the point of contact starting from the head, moving down to the area of your back, your hips, your legs, and your feet. You can also get in touch with your breathing, noticing the rising and falling movement of your belly as the breath enters with the in-breath and leaves out with the out-breath. Observing this natural process of breathing. And then, when you are ready, you can now bring to mind the image of a lake. So, observing whether it's possible to see a lake inside of your mind. You can create this image based on a lake that you remember, or you could simply invent an image in your mind. What does your lake look like? Is it large or small? Shallow or deep? What shape does it have? Is it surrounded by mountains or trees or sand? What color does it have? Is it blue, white, or even green? So letting this image come into greater focus in your mind. And if for some reason no visual image present itself, you could choose to just have a feeling of the lake or to relate a verbal story of the lake. And now that you have this image or feeling of the lake clearly in the mind, see now
if you can allow the image of the lake and your body to become one, breathing together the lake in the body, feeling yourself becoming this lake, and perhaps noticing how with each exhalation you sink a little bit deeper into the mat or the bed. Now, at certain times, the surface of the lake will be completely calm. There will not be any wind wrinkling the surface, and the lake will not make any sound. And see if you can connect now there a similar feeling of quiet and calm within yourself. As you lie here as an open and allowing lake. Appreciating these moments of peace and silence. However, at other times, the lake may be visited by heavy storms, winds, and rain will stir up the surface. The water becomes muddled, unclear, chaotic. And the same can happen for us when we are faced with difficult situations. This may lead to unpleasant emotions, sensations, or thoughts. The mind becomes restless, stormy. And when this happens, can you accept this? Are these intense movements not also part of being a lake? And can you remain present with these experiences, unpleasant as they may be, and also remain present with kindness and compassion for yourself? And even though storms may stir up the surface of the lake, its deeper part remains unmoved, calm. And perhaps you can notice a similar depth within yourself that also remains steady and unmoved as thoughts, emotions, and sensations come and go
on the surface of the mind. And by bringing such accepting attention to our experiences, we naturally tend to calm the surface of our own lake. And before we know it, the lake becomes quiet and clear once again. And with this clarity, we may become able to see all the way to the bottom of the lake or to the bottom of our mind. Sometimes we might find some difficult things at the bottom of the lake. We might find self-criticism, deep fears, or painful memories. However, these are just more objects to observe and accept. So that we then can relate to them from a place of understanding, which may then ultimately allow us to let go of these things. And for the remainder of this meditation, you see if you can simply remain lying here as a quiet and breathing lake. Resting in the middle of the ever-moving sensations, emotions, and thoughts, while at the same time staying in touch with this deep inner silence and peace within you. Now, as we come towards the end of this practice, you can slowly start moving your fingers and your hands again, your toes and feet, arms and legs, and finally your entire body having a stretch if you like. And finally, opening your eyes whenever that feels comfortable. And keeping in mind as you go about your day that you can always choose to relate to the image of the lake with its openness, acceptance, and deeper silence.
हेलो। हाँ जी। आज भी मेडिटेशन में पता नहीं क्यों बार बार गड़बड़ वाले थॉट ही आ रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं, गड़बड़ वाले आ रहे हैं मतलब वो एटलीस्ट कॉन्शियस हो तुम उसके बारे में ना। वो थॉट्स आ रहे हैं, that's okay, but understand that those thoughts are coming and going. Yeah. So rather than again getting too much concern कि ये thoughts आ रहे हैं, मैं इस बारी जब दोबारा आया तो कंसर्न ही नहीं किया मैंने। It came, it was there for some time. I just somewhere while breathing I just said कि now you need to go. फिर गया वो, फिर मतलब it was just back forth था थोड़ा सा, but ठीक था, but I was aware what was as you said the situation going on in my mind. Correct. So that is what is that, make us more grounded. That I can observe my own thoughts without feeling any fear or troubled about those thoughts. So when I feel troubled or disturbed by those thoughts, that means I have been uprooted from my roots. That who I am, that awareness, which is neither thoughts nor emotions or sensations. And they will eventually stop affecting me. Once I switch that position from inside the jungle to the helicopter who's flying above the jungle. So when you are flying above the jungle, you are not sort of afraid of what may happen, what kind of wild animals will be there. But when you are above the jungle, you are enjoying the beauty of the jungle. That's true. And you enjoy the animals also there, which may be very dangerous at times. But because you are above, and you even enjoy that you see a tiger, you see a lion. So that is the beauty. So meditation में हम लोग अपनी position switch कर लेते हैं. From that walking into the jungle to the flying above that jungle. So the more you practice this breathing space, rain exercise where you recognize that these thoughts are there, then you allow them to be there, then you investigate what is causing that. And then you come to that above that place, non-judgmental and non-doing, non-striving. You are not doing anything to handle them. You are just allowing them to be there. You become the part of the nature. Where everything coexists, exists in harmony, and automatically balance होती रहती है. या फिर you practice this lake meditation
where you start observing that on the surface level, maybe it is muddied at this moment, but inside it is calm and clear. Practice, start observing the change with every sitting meditation. Involve that informal practice when you are engaged in an activity. जैसे ऑफिस के लिए तैयार होना, खाने के लिए जाना, खाना खाते वक्त, ब्रश करते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, नहाते वक्त, ये क्या होते हैं, एक हमारी रूटीन एक्टिविटी बन गई है। जैसे हमारी ब्रीदिंग जो है वो एक रूटीन है, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। तो माइंड उसमें एंगेज ना होके अलग डायरेक्शन में अपना एजेंडा क्रिएट करता रहता है। हम एक्टिविटी तो कर रहे हैं, बट हमारा माइंड कुछ और एक्टिविटी कर रहा है और हमारी बॉडी कहीं और है, कुछ और एक्टिविटी कर रही है। बट जब हम लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, देन वी ब्रिंग आवर माइंड एंड बॉडी बोथ टुगेदर इन द प्रेजेंट मोमेंट। Then they are not away from each other. भले ही फिजिकली माइंड जो है बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बट माइंड इज समवेयर एल्स। और जब हम लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, देन वी ब्रिंग बोथ दीज फिनोमिना टुगेदर। Then they both coexist. They both support, they both complement each other. And I, being mindful, observe that both are together. Both are complementing each other. Both are supporting each other. So maybe write down that what are the activities, routine activities you want to practice mindfulness for, in those activities. Observe thought when you are going to work. What thoughts are popping up in your mind, and what is the reason for them? वो उधर जाओ ही नहीं। यार ऑफिस जा रहा हूँ, कलीग के साथ ये है या वो है, या बॉस के साथ ये है, या इस क्लाइंट के साथ ये है कुछ। बट डोंट प्रैक्टिस जजमेंटल, रिमेन नॉन जजमेंट, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड एक्सेप्ट rather than practicing judgments. यार ये क्लाइंट बुरा है, ये कलीग अच्छा है। So practice that non-judgment. Become more mindful. अभी जैसे मैं तुम्हारे को बताता हूँ अभिषेक, मैंने थोड़ा सा पैसा शेयर में डाला था, मार्केट डाउन है जी। तो ये मैंने नोटिस किया कि जब मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ, खटाक करके एक छोटा सा ऐसा हैवीनेस आ जाती है हार्ट में। ये मैंने ऑब्जर्व किया। अभी मैंने क्या किया है कि मोबाइल हाथ में उठाया उसको लेने के लिए, फिर मैंने देखा कि भैया देख, यूनिवर्स जो है वो लिमिटलेस है, और ये हैवीनेस क्यों आ रही है? मार्केट डाउन तो नहीं है यार, कहीं मेरा पैसा जो है उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो गई? तो ये थॉट यहाँ अटैच है। एक तरफ आया कि भैया मेरे को, मैं इधर लिमिट की तरफ क्यों फोकस कर रहा हूँ? यूनिवर्स अनलिमिटेड है, तो लेट मी बी दैट अनलिमिटेड। व्हाटएवर हैपेंस हियर, अगेन इट्स अ टेम्परेरी फेज। मार्केट आज कल ऊपर आने वाली है फॉर श्योर। तो आज सिचुएशन अलग है, बट इस सिचुएशन में जो मेरे थॉट चल रहे हैं वो क्या है? तो वो जो मेडिटेशन में था, दैट
situations come and go. Situation changes. They are not you, they are part of you. And जो statement था कि is that true? Things will not change. Is that true that I am not good enough? Is that true that the other person has never done good? Maybe it is he or she has not done good enough to me. But is that true that other person is bad? Maybe for me it is bad, for other person it is good. For his own family, person may be extremely good. So is it true what I am experiencing, or just a situational perspective again? So the moment you switch or you move out of that river of thought and you stand on the bank and observe that river flowing freely with its own beauty, then you admire that. Or maybe you enter that lake and you flow with that current of the water effortlessly. You float above that. So the moment I switch my position and start observing, I am like completely different person, completely unaffected being and different being, because I am seeing the temporary and not considering it as a permanent. River is flowing. River is flowing permanent, but जो same water है, जो same thought है, वो flow होके आगे चली गई, है ना? तो ये changes मेरे अंदर आए. So whenever you experience कि thoughts बार-बार आ रहे हैं, how are you analyzing? How are you judging? Or is it good to judge and analyze, or just observe their thoughts only? दो पोजीशन स्विच करनी होती है जी भैया, है ना? तो यही स्विच, जैसे जितना ज्यादा कॉन्शियस रहोगे उतना जल्दी तुम उससे अनअफेक्टेड होना शुरू हो जाओगे. इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है. कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या सिचुएशन को किस तरीके से व्यू करना है वो एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. द मोर यू प्रैक्टिस दिस पर्सपेक्टिव, द मोर यू आर बिकमिंग माइंडफुल. क्योंकि दोनों मेडिटेशन के बाद तुम्हारा रिएक्शन एक था कि थॉट्स आए, थॉट्स आने दो, माइंड का काम है सोचना. So instead of understanding or instead of elaborating on thoughts, when you accept that it is a thought, उसके आगे पीछे कुछ अटैच करने की बजाय, तो थॉट अगर इतनी है तो मैं उसके आगे इतना अटैच कर देता हूं और उसके पीछे इतना अटैच कर देता हूं, तो बड़ी हो गई ना. जी बिल्कुल. बट अगर मैं सिर्फ उसको एज ए थॉट ऑब्जर्व कर लेता हूं, देन इट इज वेरी स्मॉल. और उसको तो भाव नहीं देता हूं तो निकल भी जाती है. एग्जैक्टली. जैसे आज सेकंड उसमें भाव नहीं देता, ज्यादा रुकी नहीं गई. एग्जैक्टली. फिर आई, फिर चली गई. हाँ. So don't attach any emotional or experiential tag to that thought. वो चाहे पास्ट की थॉट हो, चाहे फ्यूचर की थॉट आए.
उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। ये पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हो सकता है, कोई इमोशन अटैच नहीं करना, ना डर का, फियर का, ना वरी का, ना इरिटेशन का, कुछ उसको आगे सर और पूंछ उसके लगानी ही नहीं है। क्योंकि सर लगाएंगे तो वो अलग डायरेक्शन में जाएगा, पूंछ लगाएंगे तो और पीछे तक लंबी होती चली जाएगी। तो हमें वो कुछ अटैच ही नहीं करना है उसके आगे। जब भी अगर ऐसा होता है और पूंछ लगा दी तो जो हमारे दिमाग की लंका है उसको जलाना शुरू करेगी अननेसेसरी। हाँ एग्जैक्टली, वो सांप की तरह लपेटना शुरू कर देगी हमारे हमारे चारों तरफ। सांप जैसे उसका गर्दन पकड़ लो, बिल्कुल, तो अपनी पूंछ से वो लपेटना शुरू कर देता है हमारे लपेटना शुरू कर। तो एग्जैक्टली वो लगाना ही नहीं है हमें कुछ। मैं ना एक और मेडिटेशन रिकॉर्ड करके भेजूंगा तुम्हें जी, जिसको समझ लो कि बॉक्स मेडिटेशन है। उसमें क्या करना है, इमेजिन दैट देयर आर 3 boxes are there, and when you are meditating you observe that thought came, उस थॉट को उस बॉक्स में डाल दो। फिजिकल एक्शन कुछ नहीं करना है, तुम बैठे हो मेडिटेशन कर रहे हो, थॉट आया एंड यू पुट इट इन द बॉक्स ऑफ थॉट। उसके अंदर कौन सी थॉट है, कैसी है, वो कुछ नहीं एनालाइज करना, यू जस्ट नोटिस थॉट एंड यू पुट इट इन द बॉक्स ऑफ। थोड़ी देर में देखा यार बैठे बैठे थोड़ा सा इरिटेशन होने लग गई है, सेंसेशन हुई, यू पुट दैट सेंसेशन इनटू द बॉक्स ऑफ सेंसेशन। फिर बैठे हो तुम, फिर तुम्हें लग रहा है कि यार गुस्सा सा आने लग गया, यार कुछ हो नहीं रहा है, थॉट आई गुस्से की, वो थॉट के बॉक्स में डाला, इमोशन के बॉक्स में वो एंगर वाले को या इरिटेशन वाले के एक इमोशन आया तो उसको उस बॉक्स में डालो। जस्ट बी वॉचफुल। और वो 3 बॉक्सेस बना लो, थॉट, फीलिंग्स या इमोशंस एंड सेंसेशन, और वो उनके बॉक्स में डालते चले जी। बस ये करना। तुम 2 घंटे बैठोगे अभिषेक और तुम बोलोगे यार अभी 2 मिनट ही तो हुए मेरे को, और तुम इतना फ्रेश फील करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ अटैच ही नहीं किया उसके अंदर, थॉट को एनालाइज ही नहीं किया, तुमने ऑब्जर्व किया, थॉट आई बॉक्स में डाल दिया, फीलिंग्स आई बॉक्स में डाल दी। वो फीलिंग गुड बैड का अटैचमेंट ही नहीं करना। कुछ तो पैरों में नमनेस आ गई, उधर डाल दिया सेंसेशन में, थोड़ा सा पैर में गर्मी लगनी शुरू हुई, उधर डाल दिया सेंसेशन में। दैट्स इट। और तुम रिफ्रेश फील करोगे। वो सेकंड एरो अटैच ही नहीं करना है, थर्ड एरो अटैच ही नहीं करना है। तो ये बॉक्स मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करो, और बहुत क्विक कर सकते हो। 5 मिनट के लिए कर सकते हो, 2 मिनट के लिए कर सकते हो, 15 मिनट के लिए कर सकते हो, 1 आवर के लिए कर सकते हो। तो योर माइंड विल गेट यूज्ड टू नाउ न्यू वे ऑफ वर्किंग, and your practice of mindfulness becoming more and more strong. है ना भाई? जी भैया। मैं ये आज का एक वर्कशीट भेज दूंगा, ताकि कॉन्शियसली जब हम लोग चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो वो लेट गो भी होना शुरू हो जाती है, और जिनको हमें अचीव करना है प्लेजेंट को, उनको भी कॉन्शियस लेवल पे ले आते हैं कि जहां से हमारा फोकस हट गया था, तो देन वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट आल्सो। जी ठीक है भाई? एंड अगर बीच में भी अगर कभी कॉल करने की जरूरत पड़े अभिषेक, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल। जी भैया, श्योर। हाँ चलो देन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू भैया, बिल्कुल। चलो ओके, बाय। बाय।